लेते हैं ये. I'm going to read a little bit of my novelet, the part which is related to the teachings which we have already studied and discussed, the Sufi path. But the name of this novelet is Daira. और इसमें से रेलेवेंट पोर्शन भी मैं आपको सुना सकूंगी, जैसे कि एक लंबी कहानी है. इसमें बैकग्राउंड मैं आपको बता दूं कि द हीरो, द सेंट्रल फिगर इज अ लाहौराइट एंड ही अटेंड्स a function in the walled city where a Turkish group of students were visiting and they were part of the audience. It was a musical evening, and there he met a Turkish girl. He fell in love with her, and then later on the girl left Pakistan. Naturally she had to leave because she had to go back to her country. And this young man, he was so fascinated by that Turkish girl that he couldn't forget her. And the separation of which Allama and Maulana both talk, which is a must and an essential condition of the experience of love. Here he experiences that state of separation. And I will just read one paragraph just to express his sorrow during the phase of separation. And who wrote this? जी? Who wrote this? The जी, person? ये मेरी अपनी किताब है. This is your imagination. It's an imaginative. What? The story is imaginative or imaginative. Fiction is always real and yet not real, true and yet not true. This is what the definition of fiction is. Now, What is the name of the book? the name of the book is Hikayat-e-Janoon. Now, Faride was the name of the Turkish girl. फरीदे के जाने के बाद मैं बुखार ज़दा तवानाई की ख्वाब जैसी कैफियत से निकला तो सामने जिंदगी चटियल मैदान की तरह थी. दिन सहरा थे और रातें पहाड़. घड़ी की सुइयां मेरे गोश्त पोस्ट में खुप गई थी. कतरा कतरा गिरती सादें रगे जां पे अज़ाब थी. एक हौलनाक तन्हाई मेरी हमरकाब थी. उठते बैठते सोते जागते मैं फरीदे की याद में की गिरा में बंधा रहता. वो हर सुबह का अव्वलीन ख्याल थी और हर रात का आखिरी ख्वाब. हर सुबह सूरज तलू होते देखकर मैं फिराक के एक और तवील दिन के खौफ से लरज़ उठता और हर शाम शफक की लाली से मेरी कनपटियों में लहू धड़कने लगता. मैं दफ्तर से फारिग होने के बाद घूमने निकल जाता, मगर सड़कों पे उदासी बिछी होती. यास और अफसुर्दगी की खुद रौ घास की तरह मेरे अंदर उगती ऊंचे दरख्तों की तरह बुलंद होती और सारी कायनात पर छा जाती. अब मुझे नहीं पता कि आप लोग कभी इस किस्म की ज़हनी कैफियत से गुजरे हैं कि नहीं. I really don't know, but it can happen to anyone. This is not something which is abnormal or extraordinary. Now then he decides to go to Turkey because a stranger meets him in blue jeans, and he seems to be a foreigner, and he told him that you can solve your problem
by going to Turkey. Though he didn't know the young man and he didn't know his story, yet he gave him the advice. As it happens in the Sufi Tazkaras, ये अगर आपने कभी सूफिया के तज़किरे पढ़े हों, then you must be familiar that usually even among the Muslim Sufis, there used to be some unknown guide telling them the way to proceed. In the case of some Sufis, it is the Christ, Hazrat Isa, who meet them, though he was there, but he appears to them and he tells them what to do. Now this young man goes to Turkey and there he tries to contact Fride. Fride refuses to meet him and she tells him that now she is engaged to some other person and she won't be able to see him anymore. And after that, naturally, he was burning in the burning fire of separation, loss, depression, and the impossibility to see her again or to meet her again. Now then slowly and gradually, then once again that stranger in blue jeans meet him and met him in Istanbul and told him to go to Konya. And then the young man travels to Konya. Now what happens there? चंद दिन के बाद मुझे पुरस्कार नबी की हिदायत याद आई कि कोनिया जरूर जाना। सो मैंने अज़्म किया और ट्रेन से अपनी मंजिल की तरफ रवाना हुआ। अब आगे तो सफ़र बयान किया हुआ वो मैं छोड़ देती हूँ क्योंकि यहाँ हमारे पास वक्त नहीं है। ये आगे मैं कोनिया वो पहुँच जाता है। व्हाट हैपेंस, जब मैं कोनिया पहुँचा तो सूरज निस्फ़ नहार पर था। कोनिया पहुँचते ही मुझे सबसे पहले मौलाना रूम के मज़ार का ख्याल आया जो इस शहर की वजह शोहरत है। जब मैं मज़ार पर पहुँचा तो ज़ायरीन की काफ़ी तादाद मौजूद थी। इनमें से कुछ गैर मुल्की सयाह थे। ये हुस्न इत्तफाक था कि जब मैं उस कमरे में दाखिल हुआ जिसमें मौलाना दफन हैं तो उस वक्त वहाँ कोई न था। मैं कुछ देर मौलाना की कब्र के पास मुअद्दब खड़ा रहा। फिर मैंने झुककर कब्र को छुआ और दो जानों उसके करीब बैठ गया। मैंने अपना दहकता हुआ माथा कब्र के पत्थरों से मस किया। अजीब किस्म की ठंडक जिल्द के मसामों से गुजरती हुई मेरी रूह में दर आई और मेरे अंदर ज़मीन दोज पानियों की तरह बहने लगी। यहाँ मौलाना रूम दफन है। जगह किसी पाटदार आवाज़ का पत्थर कमरे के ठहरे हुए पानियों जैसी खामोशी में छपाक से गिरा और गैर मुल्की सयाहों का एक बॉल गाइड की राहबरी में कमरे के अंदर घुस आया। उनके जाने के बाद मैं एक कोने में बैठ गया। मैं इस्तग़राक़ में था या बुलूगी में, वक्त की रवानी का एहसास न था। दिन ढल चुका था या नहीं मुझे खबर नहीं, लेकिन कोई ऐसा लम्हा था कि मैं मौलाना की समागाह में अकेला था। मलकती रोशनी थी कि कोहर की तरह फैल रही थी। मालूम नहीं खामोशी चांदनी की तरह बिछी हुई थी। अचानक मुझे लबातों के फटफटाने की सदा आई। मैंने कोहर की चादर के पार देखा। पुरानी वज़ा की किरमजी लंबी टोपियाँ पहने, छतरी की तरह तराशे, फूल की तरह खिले, सफ़ेद लबातों में मलबूस दरवेश दुनिया और माफिया से बेखबर लेकिन हकीकत से बाखबर, किसी अनजाने सरूर से मखमूर, किसी अनजानी थाप पर एक हाथ ऊपर आसमान की तरफ उठाए, दूसरा ज़मीन की तरफ झुकाए, माबरा और मौजूद के अज़ली रिश्ता व पैबंद की निशानदही करते हुए किसी अब्दी महफर के गिर्द लड्डू की तरह घूम रहे थे।
कायनात के किसी गोशे से सदा आई, नाच नाच नाच, घूम घूम घूम। मैं उठ खड़ा हुआ, मेरे पांव थिरकने लगे। मैं रक्सा था, दरवेशों की तरह, बास्फोरस की जुमर्दी लहरों की तरह, रोमन किले की मेहराबों से चिमटी बेलों की तरह, घास में खुदरौ फूलों और नीलबू खला में तैरते सैयारों की तरह। दरवेश इतनी तेजी से घूमने लगे कि सिर्फ उनके हयूले दिखाई दे रहे थे। देखते ही देखते वो धुएं के मरहूले की शक्ल इख्तियार कर गए और फिजा में तहलील हो गए। इतनी देर में किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। एहसास की तरह नर्म, हरीर और परनिया की तरह मुलायम। मैं रुक गया, मेरे थिरकते पांव थम से गए। उन्होंने हाथ में चीनी का एक सफेद नीले रंग का मुनक्कश प्याला थामा था। प्याला पानी से लबालब भरा हुआ था, मगर मौलाना ने तवाज़ुन की नफासत से उसे यूं संभाल रखा था कि छलकने नहीं पाता था। उन्होंने कमाल शफ़क़त से प्याले की तरफ इशारा किया। मैंने प्याले के दायरे में सैयार पानी को देखा और देखता चला गया। वक्त ने अज़ल की घड़ी की तरफ मुराजियत की। इब्तदाई आफरीनश थी, सब कुछ ज़ेरो ज़बर था। खला में बिखरे हुए मादे एक दौरी गर्दिश की सूरत घूम रहे थे। समुंदरों में गर्दाब था। इस दौरी गर्दिश ने मादे के बेशुमार टुकड़ों को मरकज से दूर उछाल दिया। अनगिनत दायरे इधर उधर बिखर गए, उनमें से कुछ घूमने लगे और उनकी गर्दिश भी दौरी थी। प्याले का पानी मुतलातम था, वो छलक उठा। मैंने आंखें उठाकर मौलाना की तरफ देखा, वो गायब थे। पानी का प्याला चंद सानियों के लिए फिजा में बगैर किसी सहारे के टिका रहा, फिर धुंधलाने लगा और आखिरकार नजरों से ओझल हो गया। अब कमरे में सिर्फ मैं था। सुबह काज़ब के आसार नमूदार हो रहे थे और शीरीन लहन मुअज्जिन ने पुकारा तो मुझे झटका सा लगा। मैं मज़ार से मुंसलिक पुरानी मस्जिद में पहुंचा और सजदा रेज़ हुआ। देर तक ज़मीन की ठंडक उसकी औस में भीगता रहा और पेशानी के मसामों से मेरे जिस्म में वो ठंडक मुंतकिल हो गई। मैं कोनिया से इस्तांबुल लौट आया। जब मैं रात के वापस आया तो थकन से अंग अंग टूट रहा था, लेकिन मेरे अंदर कोई हलचल, कोई तलातम नहीं था। वो बेरहम बेकरारी जो फरीदे को खो देने के बाद मेरे रगो रेशे में थी, वो खत्म हो चुकी थी। वो मेरी नस नस में जो धड़क रही थी अब मौजूद नहीं थी। मैं पुरसकून था और मुतमईन भी। मुझ पे दायरा मुनकशिफ हो चुका था। एक वक्त था कि फरीदे मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। मैं आज़ाद और मुतमईन था। वो मेरी ज़िंदगी में दाखिल हुई। मैं मुसरत से आशना हुआ। फिर मैंने फरीदे को खो दिया और यास की अथाह गहराइयों में जा गिरा। मुझे मालूम हुआ कि दुख किसे कहते हैं, फिराक क्या है, मगर अब दोबारा मैं नीलबूं विस्तृतों में उड़ने वाले परिंदे की तरह आज़ाद और मुतमईन हूँ। अगरचे फरीदे मेरे साथ नहीं, लेकिन फिर भी मैं आज़ाद और मुतमईन हूँ, क्योंकि वो मेरे साथ ना होते हुए भी मेरे साथ है। क्या ये एक दायरा नहीं? हम नहीं होते, अदम फिर होते हैं, वजूद और फिर नहीं होते। अदम, मौसम आते हैं और चले जाते हैं। दरख्त सब्ज लबादा ओढ़ते हैं, बंजर ज़मीन से कोंपले फूटती हैं, फिर दरख्तों के सब्ज मजबूस रच होकर मिट्टी में जाते हैं। ज़मीन के सीने में संगलाह ठंडक बसेरा कर लेती है, मगर दोबारा खज़ां ज़दा ज़मीन की कूख हरी होती है और शब रोज़ के दायरे घूमने लगते हैं। This is just a piece of mystic experience in which the reality or truth reveals itself to the young man whose story it is. And the Maulana's presence, and when you will go there, you will see it is almost the same
and may you have the same sort of experience to find peace and happiness, because this man became happy despite all his sorrow and sense of deprivation. He was happy because he has understood what is reality. The understanding brought peace to him. मैम ये हो सकता है कि आपका दायरा और मेरा दायरा आपस में टेंजेंट बना के नहीं, ये वो दायरा नहीं है. It is the eternal circle of time. तो वो टाइम आपका और मेरा फर्क होते हुए भी फर्क नहीं है, because he is talking about the real time, not the subjective time. अब ये बहुत ही philosophical बहसों में हम नहीं जाते, क्योंकि ये कोर्स फिलोसफी का नहीं, तो I don't wish to enter into that part of the story. तो अब ये है कि आज हमारा जो है रूमी और इकबाल का हमने we will start a comparative study of both these towering intellectual figures of the Muslim world. And now, of course, the world also recognizes them, because Rumi is very, very popular in the West at the present moment. यहाँ तो हमेशा से थे ना. We always had a great respect for him. अच्छा जी, दोनों की दिखाएं तस्वीरें. Now you can easily recognize Maulana and Allama. चलिए आज का टॉपिक कंपैरिजन ऑफ रूमी एंड इकबाली मैंने कहा था काफी है. आपने पोस्टोफियस बहरहाल आप इसी तरह समझे कंपैरिजन ऑफ रूमी एंड इकबाल. अब इसमें जब हम कंपैरिजन शुरू करते हैं उससे पहले थोड़ा सा we will talk about the philosophical aspect or metaphysical aspect of Maulana Rum's thought. And like most of the Muslim thinkers, he believes that the human being, reality of human being according to, or the being, ontology, ये लिख नहीं रहा. Ontology is that branch of philosophy which studies the nature of being, the things which exist, what is their nature. Now, human being, वजूदियत, हाँ, वजूदियत तो existentialism हो जाता है. Could you repeat it? What is it? The science of? It is that branch of philosophy which studies the nature of being. And being means the things which exist. Human being also exists. Then what is a human being according to the most of the Muslim philosophers and thinkers, including the Sufis and non-Sufis, both type of thinkers? They believe that human being's ontological nature is that it has a physical dimension, and it has a spiritual dimension. Physical dimension is represented by the human body. It is material. It is bound by space and time. It is mortal. And spiritual dimension is divine. It is represented by the human soul. Soul is not bound by space and time, because of its divine nature. So spiritually we can be at two different places at the same time.
it is possible. Spiritually, not physically. Physically, we are either here or there. That's it. Now, psychology, which is also, or at least it was, and even now I think it is a branch of philosophy. That is a different thesis, however, from most of the people who study psychology alone. Psychology, ये तो ontology थी ना, ये मैं गलती से मेरा है, कोई उठा लेता, psychology of human beings, which means the nature of human soul. Psyche is a Greek word, it means soul. Psychology means that branch of knowledge which studies the nature of soul. Now, if we belong to 21st century, which we happen to belong, then we won't be able to understand the word soul. This will be the problem, as well is the problem to understand the relationship between Shams Tabriz and Maulana Noor. Just now, a doctor came and he came with the same problem. He couldn't understand the relationship between them. For your facilitation, I would substitute the word soul for self or personality, if you wish. Modern psychology will interpret soul as personality. And even Allama Iqbal has used the word self and personality instead of soul, because he belongs to the modern period. So he is not using the same terminology which Maulana did. Now, most of the Greeks and the Muslims, they think that the structure of human psychology is, for example, Plato. Plato thought that the human soul has three aspects or three levels of consciousness. One is the level of instincts. ये मैं मॉडर्न लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, उसने इंस्टिंक्ट का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया. प्लेटो didn't use Many levels of consciousness. और being भी कह सकते हैं आप, जो भी Soul. instincts जो हैं, एक तो हमारे अंदर क्या क्या चीजें हैं, what are the different components of our psyche. The components are instincts. This is a modern term, not used by the Greeks. They called it appetites. Appetites. We will then define what is an instinct. What is an instinct, by the way? Since you must be using the word. Intuition, No? Could be नहीं, could be नहीं. the basic instinct, the Instincts nature, are always basic. Natural Nature. output, natural reflection, natural response. जबिलत हाँ जी, जिबिलत तो तर्जुमा हो जाएगा ना, लेकिन फिर भी हमें we will have to explain to what is Understand. जिबिलत. हाँ जी. sixth sense. Nature. नहीं, these वो That बिल्कुल भी intuition. नहीं है. That is Basic instinct in nature. instinct. It is natural, about to say that. It is natural, but नहीं, nature में तो बड़ा कुछ है, अभी आपको पता चलेगा. There are so many components of our nature. Can you must be using the word instinct. Yeah, of course. Then give me an example
of some instinct, an instinct. Survival instinct, The survival instinct. survival instinct, that we always try to avoid the dangers. It is called self-preservation instinct. That's right. Anything else? Hunger. Quick reaction. Hunger, appetite, of course. The Quick reaction. नहीं reaction तो result है हमारे instinct का. Since we have that instinct, then we act according to that instinct. Attachment. नहीं I think it's going to be something like taking care of your young or procreation, Yeah. all those things which are the basis of the survival of a race or a being are the instincts that enable it to naturally endowed things. It is natural, no doubt. I do agree with you. Natural inclination of a child towards the mother. Or vice versa. Newborn baby instinctively is attached to the mother and is inclined to go to, let's say, the bosom of the mother. That The- is the again suckling survival, instinct, because we would like to survive Or with the like help the of bird birds. starts flying, and it's like it's basic. It's नहीं देखें जो the word used by Maulana and other Muslim thinkers and also perhaps Greeks, slightly different words are used in different periods. They are appetites. Appetites में क्या क्या चीजें आती हैं? It is our instinct to ये have spell कीजिएगा ऐसे टाइप। appetites. इसको spell कीजिएगा। Spell करो. जी। APP. Appetites. अच्छा ये this is अच्छा appetites की बात है। जी जी. हमारे का कोई ग्रीक ग्रीस ने तो कुछ बिल्कुल ही और किया हुआ है. वो मैंने किया ही नहीं, जो मौलाना ने एपिटाइट्स का किया हुआ है, इमाम गजाली ने एपिटाइट्स का जिक्र किया हुआ है. तो ये हमारा एक तो द डिजायर टू हैव फूड, ये ईटिंग जो है ना, ये भी इंस्टिंक्ट है. वो भी सर्वाइवल में एक तरह से ही आ गई. Ultimately the goal of instincts is survival. लेकिन otherwise there are so many forms in which we try to strengthen our physical body and to hope for its survival. उसमें आपका खाना पीना आ जाता है, ये ठीक है. And then we try to avoid danger. Then maternal instinct. ये जो इन्होंने कहा है वो उससे ज्यादा जो मदर का है inclination and affection for the child and to save him at all costs, even endangering her own life. That is maternal instinct. Some of the basic instincts. Maternal instinct is a basic instinct. And then what else? Any other example? Attraction. instinctively being conscious whether truly believing or not in the existence of the ultimate reality. If there is someone out there, Let me tell you that instincts are related to the physical dimension of human it's being. only the physical. Only the physical. Right. It's not attraction or like that true and fit. Yes. That is sexual instinct. Why don't you say sexual instinct? That's what I said. Ah. Procreation. For maybe okay, we bring it down to the basics. So that's the sexual instinct. But it's basically One of the yeah, instincts. one of the things. yes. One of the instincts. It is not the only instinct as Freud believed, because I am not Freudian. Aesthetics. नहीं. Jisse Jamalia. That is a higher level. There we have so far taken the example of different physical needs, which includes need for nutrition, वो जो के food लेते हैं. Number two, we have discussed the example of maternal instinct. We have also discussed another example, Avoidance of danger. avoidance of danger. Sleep. Self-preservation. It is called the instinct of self-preservation. Sleep के बारे में क्या कहें? जो inclination to rest after
degree you fall off to speak. If you deny yourself, you fall off yourself. That's an instinctive behavior. That is Physical mechanical behavior. Yeah. That is mechanical behavior of the body. What about fear? Okay, there are some people who either don't sleep or sleep very little. जागते रहते What हैं. about fear? जी? Fear? Fear of something? Fear, yes. Fear is also one of our instincts, one of the basic instincts. Fear. We are afraid, it is very normal. And anger, for instance. Anger, right. Anger is another basic instinct. फिर joy, happiness, सब कुछ ही instinct होती है। Envy. इसके अलावा जो हम बार दफा कहते हैं कि जी हम तो बड़े तुरम खान हैं, हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया. Self-possession is also our instinct. और appetite according to Maulana. ये जो है अब terminology फर्क है, बात वही है. I don't say so. जी. अच्छा, this is one component of human psyche. What else is part of our soul? Feeling and emotion. जो अभी आप कह रहे थे ना कि joy and this and that, we have the natural tendency to be happy or to be unhappy. Sad. Yeah. And then we have the violent emotions also. Anger. It belongs to the second, it is the second component. This was the first component, this is the second component. What else? Ego. ईगो तो सेल्फ असेसमेंट और उसमें आ गया ना. No, we are looking at the spiritual dimension or the overall or the physical, whatever these instincts and feeling are about spiritual. soul Of the soul, The the Maulana spiritual is trying to dimension. describe the different elements or components of Soul. human soul. So, right. पहले हम फिजिकल की बात कर रहे थे हम। हाँ, मतलब वो आगे जा रहे हैं ना. देखिए इमोशन पे आ गए. Emotion is partly physical, partly non-physical. And then what else is the component of our soul or self or mind? Even that word can be used according to modern terminology. Compassion and sympathy. That is in emotion and feeling. Sentiment. Elevation, जी? elevation, Elevation? of the spirit or at one नहीं, उस तरह नहीं हम चल रहे हैं. That is just a feeling state. What you are saying actually is just a state of feeling. Okay. I have a feeling of elevation or something. Self-assertion or something to that नहीं, वो तो वो तो आ instinct में आ गया. Rationality. Rationality. That's right. Who has said this? The young man? Yes. Oh, good. Now, here is a young man who has a bright mind that is to reason. Reason. Human beings, we are not animals. Animals have only appetites and a little bit of emotions. And self-preservation. That Animal is will be instinct. instinct. That is instinct. Yeah. But they don't have reason. And it is because of reason that we are considered superior That's right. to a number of other Species. species. And then, according to Maulana, as well as Allama Iqbal, there is intuition, which is not reason. Intuition.
power of making choice doesn't come into this. Foil mukhtalif. That we will discuss later on when we will talk about the We freedom think- of will. I think we're going to be- Intuition means knowledge which is not based on reason. Sometimes we suddenly know something and that comes out to be true and turns out to be true, and yet we have no proof in the beginning whether it is true or not. Now, this thing is called actually in religion, kashf ilham. Kashf ilham, when you don't know, you don't have any real or scientific or rational sources to know that, and yet you come to know that. And that is intuition. And here most of the Muslim philosophers and thinkers stop, but Maulana has added another component to this nature of psyche, and that is love. The others haven't done that. And this is actually the foundation stone of all his thought. वो दिखाएं Intuition in Urdu would be Wijdan. नबरदान. But won't that be a part of emotions actually, or separate somehow? If it is only emotion, then it will have no cognitive element in it. But if it gives you knowledge as well, then it is not only emotion, it is something else. हाँ जी, थोड़ा सा वो करें, 4 सेकंड्स का जो किए थे. Love, the experience of love or the faculty of love. According to Maulana, every one of us has this capability to love. But it doesn't mean by that sex, it doesn't mean by that physical love, it doesn't mean by that the desire for the material goods. Mala daulat dunya butane bahmu guma, Iqbal ne kaha hai. That is not love. Love for him is the desire of reunion with the ultimate source of all existence, that is God, Allah. And almost the same ideas are present in Iqbal. Actually, when we study Allama and then we study Iqbal, we see so many similarities in their concepts. Now here, what is ishq? It is the highest form of love and it is not physical. The desire for body or outward beauty is not a spiritual experience, and such loves, according to Maulana, leads to nothing. Leads to nafs? Nothing. Nothing. Futile. It leads you nowhere. क्योंकि जब वो खत्म होता है, वो खत्म भी बड़ी जल्दी होता है. जब वो खत्म होता है तो then we are as empty as we are before having that union or that person or that those riches which we wanted to have. वो भी material goods जितने भी हैं या physical desires, they lead us nowhere. हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे कम निकले. बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम.
So Maulana does not mean that love is not a desire in that sense, in that particular sense, in which, for example, Ghalib is using it. I don't know, but I've always related to love जैसे अल्लाह ताला के लिए हम कहते हैं कि वो सबको हाँ। माओ से ज़्यादा प्यार करता है। तो दुनिया में मुझे लगता है अगर कोई वाकई लव है तो वो एक माँ का अपनी औलाद के लिए which is unconditional, you know. Love is unconditional, whether it is for God or for the child, if it is. But you see, sometimes it becomes conditional. This is of a tragedy. And we come across such episodes which shock us. ये तो suppositions है ना कि जी माएँ ऐसी होती हैं. Sometimes we see mother behaving in a very strange manner. Something wrong with the instinct. हाँ, नहीं ये देखिए केसेस इसमें मौजूद है ना. एक बहुत ही famous case in America, for example, that woman, she was a nightclub dancer and she got married. She had 2 children, and now she had a totally different type of life. She had to look after the children, and she didn't like it. And when one day she was so much fed up with the whole thing that she went out of the house, and later on she said, she reported to the police that her children are missing. And then that spies and investigation and all that finally led to the truth that it was she who herself murdered the children. तो इसलिए इतना भी एतबार नहीं किया जा सकता जितना कि we are imagining. We do hope for such things, and these are our ideals, but realities are sometimes very bitter. So ये है कि वो तो instincts में आ जाएगा ना. मौलाना is not talking about the instinctive loves. It's मैंने आपको बता दिया कि it's burning desire to meet its source of existence. And in Sufi literature, the concept of love is the same which Maulana is presenting. ये वो कॉन्सेप्ट है जो सूफीज के यहाँ मौजूद है. Whether they are poets or not, they believe in that type of love. And this love experience is something which has certain attributes or qualities or characteristics. Now, one characteristic is the power to grow and assimilate. The power to grow and assimilate. Love makes you grow yourself, for example, your personality, enriching of your personality. It leads finally to that. And that's why Allama Iqbal also believed in love. Ishq for him is not an emotional experience only, but also a mobilizing force, a force which leads you to action and to growth, and you start assimilating the things. यानी अपने अंदर आप जज्ब करना शुरू कर देते हैं. और जज्ब व कैफ की जो टर्मिनोलॉजी है सूफीज के यहाँ तो इस्तेमाल होती है कि फलां जज्ब की कैफियत में है. And if they have that state of mind, then people call them majzoub, जो कि आम आदमी समझता है कि पागल हैं, but actually they are in a state of assimilation. Then this sort of experience is basically an experience of intense emotion of sorrow and separation. ये पहले भी हम कर चुके हैं ये point. और इसके अलावा ये है कि it extends our perceptions, it changes our perception. And when our perceptions are changed, then what happens? That there are so many things which are bothering us, they stop bothering us. Then here is a verse from Masnavi. Az mohabbat dar takhte mi shabad.
बज़े मोहब्बत बार बख्ते मी शबर az मोहब्बत नार नूर मी शबर बस मोहब्बत दियो हूरे मी शबर। वाह, नहीं तो मेरा ख्याल आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई तो बता दें। अच्छा इंग्लिश आपके तो पास बैठी हुई हैं। That changes your perception, and even if you are dying, even if you are in pain, even if you are in the company of some very unpleasant people, you don't feel the unpleasantness, you don't feel the pain, you don't feel the fear. That's what love has the power हाँ, to do. मैं आपको फिर जरा करा देती हूँ, सुना देती हूँ। और अज मोहब्बत दार तख्ते मी शबर, कि मोहब्बत अगर हो, इश्क अगर हो, तो जो सूली है वो तख्त लगता है, महसूस होता है। अगर मोहब्बत हो तो जो बोझ है वो खुशकिस्मती महसूस होती है, कि वो खुशकिस्मती है मेरी। अगर मोहब्बत हो तो आग जो है वो नूर में यानी लाइट में बदल जाती है। अगर मोहब्बत हो तो देव होगा, लेकिन वो हूर लगेगा आपको। Beauty and the Beast. Beauty and the Beast, if you remember that fairy The tale. beast will also look beautiful. Yes. Yes. And he will become beautiful. If you remember the fairy tale, Yes. because every fairy tale has a lot of wisdom in it. And it is, once you have a different perception or understanding of a thing, object or situation, it changes. It becomes different. हाँ नीरबा, आपको मेरा ख्याल शक है कुछ इस बारे में? नहीं, मतलब है तो बताएं. We would love to discuss it. Then, according to Maulana Room as well as according to Allama, love strengthens our personality. It makes you strong. It makes you brave. सेल्फलेस हो जाता है इंसान हाँ, यानी उसको अपना इतना ख्याल भी होता है। अमूमन हम अपनी वजह से डर रहे होते हैं ना बहुत सी चीजों से। बहुत चीजें करने से रुक जाते हैं। हाँ, yes, but once we are doing something with our heart, with love, then we don't care whether we become ugly, whether what happens to us is death or torture or something else. So even Mansoor Halal can be quoted. He didn't care that he will be tortured, he will be killed, he will be punished. So perceptions become. उनके हाथ काट दिए गए तो अपने वो कटे हुए हाथों से उन्होंने चेहरे पर खून लगा के कहा कि मैं अपने खून से वुज़ू कर रहा हूँ। हाँ, मतलब perception ही और हो जाता है। फिर भी उन्होंने वो माफी मांगने से इनकार कर दिया, पाँव भी काट दिए, उनके सूली पे चढ़ा दिया। तो वो देन वो जैसे फरमा रही है कि अपना फिर ख्याल नहीं रहता, बल्कि उस डिवोशन के हवाले से और उस लव के हवाले से सही कह रहे स्ट्रेंथ मिलती है। और इकबाल का भी ये ख्याल है ना कि once we have some goal and we really have feeling for that goal, if we love that goal, then we will do anything for it. The self will disappear. Yes, self in the ordinary sense. Egocentric self will disappear. Not the self. No, But very Personality will unfortunately, we are only taught to fear, never to love. नहीं, we do love, but Because our when we are love talking is about not the very existence, strong. so when we think of the existence, it is the divine existence. But rarely ever does anybody tell us to love the divine existence. नहीं बताया तो जाता है बच्चों को हम शुरू से कहते हैं कि भाई अल्लाह मियाँ से प्यार करो, अल्लाह मियाँ तुमसे प्यार करेंगे, कहते तो हैं, वो सिर्फ कहते हैं। जो बोलते हैं ना डराने वाला है। हाँ, नहीं, our first kalma is the most benevolent, the most merciful, begin our और हम तर्जुमा सिखाते ही नहीं, हम कभी उसकी स्पिरिट तक जाते नहीं, ही नहीं। रहमान और रहीम तो हमें वैसे ही पता होता है कि मतलब रहम खाने वाले और उनके अंदर कंपैशन और मर्सी, ये तो तर्जुमा को इतनी नहीं ज़रूरत होती।
लेकिन ये कि nobody bothers to educate the people in that way. अच्छा, then another common point between similarity between Allama and Maulana is that according to them, it is through love, through ishq, that it is possible to have a direct contact with the ultimate reality. This is the, सफना फी अल्लाह इतना ज़्यादा होता है. And every soul can have their own direct contact, in its own way. in their own journey. Journey. Everybody has its own journey in life and in spirit also. And It is spiritual. not the same. Same. It can't be a uniform. But you can be, you acquire some guidance from certain people. That's This is what the Sufis believe, and I think perhaps they are right. Then something which Maulana says, and I will discuss later on, which is of course different from Iqbal's concept of love. Now Rumi, like Iqbal, lays emphasis on self-realization, or khudi wala. Iqbal uses the word khud.